computer era, you know that what is mathematics. If I say what is integration, you know that formula. But how to apply that is important. So, अभी like sir ने कहा कि we are standing here, Aryabhatta discovered the zero. But I said that because he's a computer department head and the principal and all those things, he is standing only because we invented the zero. That's why now the binary system is there and the computer is there. So you are all are there. What is saying about the tsunami waves or all those things? And at that time, our nuclear reactors were not working. And we have the boiling reactors. सबसे ज़्यादा जो सुनामी में नुकसान हुआ था, जितना भी चेन्नई पोर्ट पे और जितने भी हमारे reactors थे, nuclear reactors, all these they are damaged. As I am associated with Bhabha Atomic Research Center and DRDO also. So now in India we have developed, because I belong to the family जहाँ शायद कोई पढ़ा भी नहीं और मैथमेटिक्स तो बहुत दूर की बात थी. और whenever I go to anywhere, सबसे पहले क्वेश्चन होता है आप क्या कर रहे हो? If I say I'm a professor, किस सब्जेक्ट के they considered as a human? I will soulless Greeks, which पता नहीं किस पे भूत की तरह से we are working. Same way, all mathematicians are mad. That I am listening with the everyone. We are not living in a part of the era where the mathematics is. Said that now we are talking about the computer. We have the set theory. But if we are not developed the set theory and the compartment of the set theory, your computer is nowhere. So this is the set theory which is developed and then the mathematics is there. Axioms we are giving in probability. Everywhere they started with the Saraswati Puja, that is also a chanting of the mantras, and mantras are based on a mathematical form. Either we talk about the Ramayana or any kind of that, Sundar Kand, if we take, that has a particular number of duas, and every dua has a particular number of the lines. So that is the beauty of our ancient mathematics. As we have done the prayer of the Saraswati, that is nothing but a mathematical animation of the, and this is made only in a simple computer. In your hand. No one analyzes at any time. And everyone born with your hand and you have a mathematics in your hand. Now see that this is the first line, which is known as a heart line. And this is a identity function, and which is nothing but your head. वो क्योंकि उसकी लिविंग फूड से रिलेटेड है, क्योंकि अगर उसमें कुछ उसने कमी करी तो दैट विल बी गिविंग अ लॉस. तो जब हम मैथमेटिक्स को एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कंसीडर करेंगे तो शायद हम पढ़ेंगे. अगर फोर्सफुली स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो शायद मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ेंगे. एंड वी आर ऑलवेज, और शायद मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ और जितने भी पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ सबसे पहले उनका ये होता है हमारा बच्चा मैथ्स में कुछ कर नहीं सकता तो कोई ट्यूशन बता दीजिए या ट्यूटर बता दीजिए सो दैट वी कैन पुट इट. ट्यूशन बताते हैं पर कोई कभी समझाता नहीं है व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ इनवर्स फंक्शन. ओके, अब अगर फंक्शन है कैट एट द फिश तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा? फिश ईट्स द कैट. बट दिस इज नॉट द, this is only a visualization because then the conditions are there, it has to be satisfied. So that always has to be y equal to x, then only you grow. So this is always in hand potatoes, and I know that younger generation didn't eat that, but if you are coming to the first derivative of that, finger chips, everyone likes that. So it is nothing of the form or the rate of change of the potato करता है अगर मैथमेटिक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा. इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. कंप्यूटर थिंग्स व्हिच इज नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, यू आर सेइंग अबाउट दैट. इट इज अ प्रैक्टिकल, and practical is we are existing, so it is a practical. I will show you that how in our body you have a complete mathematics. What is the beauty? Why I put it here as a mathematical like a fool. इसकी क्या ब्यूटी है? Like a flower. कुछ तो what we did, कंप्यूटर आ रहा है तो आसान भी है.
ये जो प्लस है you repeat on all the lines. Okay, again you did the same thing, again you do. What is this? Is your initial, this is first, second and third iteration. Now you see in the third iteration how complicated structure you got it. But the beauty of this structure is, and this is known as the fractions or fractal. So what is the definition of this? It is an extremely irregular line or surface formed by an infinite number of similarly regular sections. Okay? Physically it is a rough geometric structure, but mathematically it is a set of points whose fractal dimension exceeds its topological dimension. Same way, cos lines हमारी consider की जाती circles, but these are not circles. Same way, शायद फिजिक्स में शायद 6 7 में पढ़ाया जाता है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब बिजली चमकती है कभी किसी ने स्ट्रेट लाइन में चलते हुए देखा है? तो इसका मतलब हम जो पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं. So light never travel in a straight line. Okay, दिया था कि this is known as a zero, but शून्यम सहस्त्रम हम सारे वर्ड्स यूज करते थे. पास्कल ट्रायंगल अभी बात कर रहे हैं, एंड अगर इसकी ब्यूटी देखो, ये चाइनीज अर्थमेटिक ट्रायंगल है, और अगर पास्कल ट्रायंगल की ब्यूटी देखो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग 1 1 and the 1 plus 1 is the middle part, and which is nothing, a form of a Fibonacci is also the same thing. तो आज के जो कंप्यूटर का बेस है, हम जब कहते हैं कि कोई मंदिर का जो बनता है उसमें गर्भ 0 1 is C, 1 0 is D and 1 1 is D. ये तो आती है लैंग्वेज बाइनरी. अब इसका जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उतने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स यू हैव इन द थ्रू आउट दैट, एंड यू सी दैट. इसीलिए किसी की डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं मिलती है. ओके, only I am giving you the glimpses that how you have a different applications. Of course क्वेश्चंस पूछ के तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, but फिर भी I have asked that any questions or any comment, and my email ID is if you want any query or anything, it is there. वाह, चलो, So थैंक यू. no comments. मैं सब कुछ सब दिमाग के ऊपर से निकल गया. Anyway, thank you very much. वाह.